सर ऑफिशियल्स सर, मैं आपको बोल दूँगा, कॉल कर दूँगा ब्लॉक पे। थोड़ा थोड़ा डोंट कॉल नहीं नॉर्मल। आई विल कैप्टन ओनली वन शॉट బాబు మా డైస్ కు లెఫ్ట్ సైడ్ లో AK5 ఉంది, అక్కడి నుంచి చూపించండి. రైట్ సైడ్ లో ఉన్నవారు కూడా ఏ వాలంటీర్స్ బాబు వెనక్కి. AK5 ఆఫీస్ బేరర్స్ మాత్రమే అక్కడ కేటాయించబడింది. AK5తో సంబంధం లేని వారు దయచేసి వెళ్ళిపోండి, అక్కడ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళి కూర్చోండి. AK5 ऑफिस बेयर्स के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, कृपया वहां से उठ जाइए प्लीज. और तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन के ऑफिस बेयर्स से मैं विनती करता हूं, हमारे डाइस के राइट साइड पर TKA लिखा हुआ है, वहां पर जाकर बैठ जाइए. मैं वेणुगोपाल जी, हमारे भारतीय कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाया है, वो पुलिस के DSP है. मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ. हमारे फॉर्मर नेशनल कबड्डी खिलाड़ी आदरणीय नागेश्वर राव जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ.
मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कैप्टन, अपने समय के मशहूर इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी वेंकटराम रेड्डी साहब का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसी तरह बाजूपल्ली से हमारे कासानी ज्ञानेश्वर मुनिराज जी के बाजूपल्ली से जितने भी उनके बंधु मित्र मंडली, जिसमें फार्मर कारपोरेटर्स है, एमटीपीसी है, सभी मित्रों का मैं तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। Second call for the second semi-final match will be between Haryana and Himachal Pradesh. I request both the team coach managers, please make a note. The second call for you, Haryana versus Himachal Pradesh.
मैं सभी AKFI और सभी भिन्न भिन्न स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स सभी स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज AKFI ऑफिस बेयर्स सबका स्वागत करता हूँ और आपको समाचार देते हुए मैं काफी हर्ष होता है। हमारे बीच डॉक्टर SR प्रेमराज जी ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो जापान जाने वाली टीम में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय कासानी वीरेश मुनिराज जी का। वो हमारे तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। वीरेश मुनिराज जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बी जगन्नाथ स्वामी एशियन चैंपियनशिप कलकत्ता में भी एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लिया है। वो रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स एजेंसी का मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर SR प्रेमराज इंटरनेशनल खिलाड़ी डॉक्टर SR प्रेमराज जी रिटायर्ड डायरेक्टर स्पोर्ट्स एजेंसी है। वे पहली भारतीय टीम में जापान जा चुके हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। और सिफत तकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया के वो पूर्व प्रेसिडेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेमराज जी। बी जगन्नाथ स्वामी जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री चेन्नई वेंकटेशन जी और नेशनल फिशरीज का बोर्ड चेयरमैन है। आपका स्वागत है। साथ ही साथ गौरी शंकर जी AICC सदस्य
काफी सीनियर कांग्रेसमैन है, आपका स्वागत है। प्लीज कम ऑन लीडर्स। भाई अजय कुमार जी, श्रीधर भाई, चुक्का बाबू अन्ना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन ऑफिस बेयर्स, जिसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी है, आपसे प्रार्थना है कृपया राइट साइड पर आपकी बैठने की व्यवस्था की गई है। ये अपना टूर्नामेंट है, आप सहयोग कीजिए। मन वेदिक వైపు తెలంగాణ కబడ్డీ అసోసియేషన్ కార్యవర్గానికి మరియు మన అధ్యక్షులు సంయుక్త కార్యదర్శులు అందరికీ కూర్చోవడానికి ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి। దయచేసి రైట్ సైడ్ లో ఏర్పాటు చేసిన టీకేఏ అని బోర్డు రాస్తుంది, దయచేసి అక్కడ కూర్చోవాలి। మన టోర్నమెంట్ మనం సాగించాలి। మన మెయిన్ దగ్గర 8989 ఫార్చునర్ ఉంది, 8989 ఫార్చునర్ 7272 యాడింగ్
Do or die. Do or die. Do or die.
लाइनअप ऑफिशियल लाइनअप करा दीजिए प्लीज। लाइनअप करा दीजिए प्लीज। पूछता हूं विनर रनर को नगद पारितोषिक दी जा रही है। ये सेमीफाइनल खेलने वाले टीमों को विनर को हर खिलाड़ी 1500 रुपया और हारने वाले खिलाड़ियों को 1,000 रुपया नगद दी जा रही है कासानी परिवार की ओर से। चेन्नई वेंकटेशन गारू विनती करता हूं वो कैश अवार्ड देने के लिए कोर्ट में जाएंगे। परिचय करता होंगे सतीश कुमार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खिलाड़ी है, नवशक्ति क्रीड़ा मंडल, और वो बीच कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी है। मैं हमारे सेक्रेटरी जनरल तेलंगाना फॉर्मर 7 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट भक्ति महेंद्र